नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। माय नेम इज सुजाला और आज हम प्रैक्टिस करेंगे योगा की, बट मोस्टली आवर कॉन्सेंट्रेशन विल बी ऑन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। और कुछ प्रैक्टिसेस, कुछ रूटीन्स हम ट्राई करेंगे वेट्स यूज करने का। तो वेट्स आप नॉर्मल वेट्स भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज आपके पास वाटर बॉटल्स घर पे होंगी, फिल कर लीजिए वो वाटर बॉटल्स और चले आइए अपने मैट के ऊपर। लेट्स स्टार्ट। चलिए थोड़ा सा वार्म अप करते हैं। इनहेल, स्ट्रेच योर आर्म्स इस तरह से। एक्सहेल, बेंड फॉरवर्ड। इनहेल करेंगे, दोनों पैरों को पीछे लेंगे, नीज को बेंड करेंगे और पुशअप की, हाफ पुशअप की प्रैक्टिस करेंगे यहाँ 3 बार। 1 2, बॉडी को जितना हो सके यू हैव टू कीप इट फॉरवर्ड, एंड 3। वाओ। एक्सहेल करेंगे, डाउनवर्ड डॉग। दोबारा से नीज डाउन, बॉडी फॉरवर्ड, 3 पुशअप। 1 2 3 एंड अप। वेरी गुड। एक्सहेल करेंगे, पर्वतासन, डाउनवर्ड डॉग। 1 more round, last round, knees down. Inhale and exhale, push up. 1 2 and 3. Very good. Lift your knees up, plank position. Exhale, walk your legs forward, पैर हाथों की तरफ ले आएंगे। रिलैक्स करेंगे अपना हेड, धीरे से, हल्के से। Knees bend. Inhale, stretch your arms up. थोड़ा सा बेंड, हल्का सा। और एक्सहेल रिलीज करेंगे अपना हाथ। एक और बार। इनहेल, हैंड्स अप, स्ट्रेच करेंगे अपना बैक। एक्सहेल, स्लोली एंड जेंटली, हाथों को नीचे, नीज बेंड रख सकते हैं फॉरवर्ड फोल्ड की पोजीशन पे। पैरों को वॉक कीजिए और ले जाइए प्लैंक पोज पे। एक बार प्लैंक पोज पे आ जाने के बाद ड्रॉप योर नीज, बॉडी फॉरवर्ड, 3 पुशअप्स। ओके, पीछे के एंकल्स को आप इंटरलेस कर सकते हैं, इंटरलॉक कर सकते हैं इस तरह से। स्टार्ट कीजिए। 1 2 3। बैक टू डाउनवर्ड डॉग। बैक अप, knees down. Second round. 1 2 3. Wow, awesome. Exhale, downward dog. 1 more round, last round. इंटरलेस कर लेंगे अपना पीछे एंकल्स एंड 1। बॉडी को सामने रखना है, ठीक है? ऐसे पुशअप नहीं करना है, बॉडी को सामने रखना है। 3 सॉरी, 1 more round. Wow, awesome. Exhale, पर्वतासन. Walk your legs forward, knees bend, forward fold. Inhale, slowly, gently come up. Release, stretch the back, and release your hands. Very good. अपना वेट से लेंगे। मैंने यहाँ पे अराउंड 2 kg के आसपास का वेट लिया हुआ है। आप चाहो तो ऑब्वियसली वाटर बॉटल्स यूज कर सकते हो। प्रैक्टिस क्या करनी है? फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू स्ट्रेच योर आर्म्स। थोड़ा सा बेंड करेंगे, इस तरह से एक बार करेंगे, कम अप एंड रिलीज। ओके, सो लेट्स डू इट 10 rounds. Let's start. And hands up, forward down, fold down, knees bend, straighten your arms at the back, back to the chest, come up and release. 2, bend, up and down. 3, bend, up and down. 4, bend, stretch, bend, up and down. 5, bend, stretch and bend, up and down. 6, bend.
स्लोली जेंटली रिलीज करेंगे वेट्स नीचे, हाथों को करेंगे रिलैक्स, 1 डीपर ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सहेल। कम ऑन योर नीज, हाफ बेंड पोजीशन पे, या इस तरह से पूरी तरह से भी बैठ सकते हैं। आई विल बी ऑन माई नीज, और अपने वेट्स को लेके इस तरह से लिफ्ट करेंगे एंड फॉरवर्ड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट 10 राउंड्स अगेन। 1 2 3 4, अपने एल्बोज को हल्का सा बेंड रखेंगे, पूरी तरह से स्ट्रेच नहीं करना है। 5 6 7 8 9 and then release and relax. नेक्स्ट प्रैक्टिस, अपने हाथों को इस तरह से ऊपर लेंगे एंड देन यू गोइंग टू प्रेस नीचे और ऊपर। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and then very good. Slowly release the weights, relax, shoulders back, 1 deeper breath, exhale, release. Very good. Come back up. इस तरह से अपना वेट्स वापस लेके हम ट्रायंगल पोज की प्रैक्टिस करेंगे। तो अपने लेग्स को 3 फीट अपार्ट रखेंगे, राइट लेग टुवर्ड्स द राइट साइड। इनहेल, टेक योर आर्म्स अप, एक्सहेल, यू आर गोइंग टू बेंड टुवर्ड्स योर राइट लेग एंड जस्ट पल्स। 1 2 3 4 5 6, बॉडी स्ट्रेट रखेंगे पूरी। 7 8 9 and 10. Lift both the hands up, right leg back, left leg को left side की तरफ करेंगे और triangle pose of the left side and let's pulse. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Very good. Slowly come back up, leg back, exhale, release your hands. चाहे तो weights नीचे रख दीजिए, otherwise just take the shoulders back, down and just squat your knees slightly and pulse. 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Very good. Slowly and gently अपने मैट पे आ जाइए और इस तरह से अपना पीठ के बल इस तरह से लेट जाइए। आपके हाथों पे वेट्स है अभी भी नहीं है तो ले लीजिए। You're going to take your hands up, okay, and draw your weights down इस तरह से and then again come up. Okay, let's do 1 2 3 4 5. अपने पैरों को उठा लेंगे और सेम प्रैक्टिस करेंगे। 1 2 3 4 5. वेरी गुड। स्लोली रिलीज करेंगे, वेट्स को नीचे रखेंगे, आंखें बंद, 1 डीपर ब्रेथ,
वेरी गुड, रिलीज। नीज को बेंड रखेंगे, दोनों वेट्स को इस तरह से ऐसे दोनों हाथों में इस तरह से ले लीजिए, ओके, या दोनों बॉटल्स को एक साथ ऐसे पकड़ लीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगे। दोनों पकड़ने के बाद knees up and you're going to take the weights back and up. 1, 2, elbow slightly bent. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Slowly release the legs, release the weights down. एक बार फिर हाथों को इस तरह से ऊपर लेंगे. We are going to come up and down. Okay, bend legs, knees bend. इस तरह से squeeze करेंगे और lift करेंगे. 2, exhale, squeeze. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and slowly release. One deeper breath and roll towards the side. Come up to sitting position once again. हाथों को इस तरह से फॉरवर्ड रखेंगे, वेट्स हैं आपके हाथ में, and you're going to bend your arms and up, straighten it, bend and straighten it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 5 more. 2, 3, 4 and 5. एक्सहेल, रिलीज करेंगे अपना हाथ. हाथों में वेट्स रहने दीजिए, शोल्डर्स पीछे और नीचे. रिलैक्स. वेरी गुड. टेबल टॉप पोजीशन पे आ जाएंगे. अपने हाथ में बॉटल या वेट्स जो भी है वो रखेंगे और इस तरह से चेक करेंगे. राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट. 4, 5, 6, 7, 8, 9. रिलीज. हाथों के पीछे. लास्ट प्रैक्टिस बोर्ड पोजीशन में. हैंड्स यू गोइंग टू स्ट्रेच अप एंड डाउन. ओके, बोर्ड पोजीशन में. मैं हाफ बोर्ड पोजीशन में हूँ, आप चाहो तो फुल बोर्ड पे भी रह सकते हो, या अगर ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा है तो लेग्स को इस तरह से स्ट्रेट भी रख सकते हो. वॉट एवर इज कंफर्टेबल फॉर यू. आई जस्ट फोल्ड एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Awesome, you guys. Wow, we did it. हल्का सा ट्विस्ट कर लीजिए before you relax, and if you want to go for shavasana, please go for shavasana. आई होप मेरे साथ आप ये सारी प्रैक्टिसेस कर रहे हो. किसी भी पॉइंट पे अगर आपको लगे कि अरे मेरे पास टाइम है, मैं थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर सकता हूँ, या मे बी मेरे पास शाम को टाइम होगा तो मैं दोबारा से यही प्रैक्टिस शाम को भी कर लूँगी, तो यू नो व्हाट विल हैपन. इट विल डेफिनेटली हेल्प यू विद द रिजल्ट्स. ओके, नमस्ते. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा इफ यू वांट टू गेट एनी नोटिफिकेशन एज सून एज आई पोस्ट अ वीडियो. ऑल्सो
मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है। हम काफ़ी 2 हफ्ते हो गए हमें, तो मुझे बताइए कि हाउ आर यू फीलिंग, हाउ इट इज़ गोइंग ऑन, आपकी माइंड बॉडी पे क्या असर हो रहा है, आप प्राणायाम की प्रैक्टिस कितनी बार कर रहे हो, या आपको कोई भी डाउट्स हो मुझे ज़रूर पूछिए, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू योर क्वेश्चंस।